Here we start firewall. As firewall is what? It is a type of security system which protects your computer or laptop from incoming traffic or from any fake IP address. Like here is a diagram of a typical layout of firewall. Here is one protected private network and here is internet. And in the middle there is a firewall. Now what happens? The user from a protected private network want to access the internet. Now when we want any access from the internet, that means a request will be passed to that server. अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास सर्विसेज उस वेब सर्वर से आएंगी, देन द IP एड्रेस of that web server will pass through this firewall. Now firewall will check the IP address whether that IP address is fake or real. After checking the IP address, only then the firewall will permit the web services to the user who want to access from the protected private network. Now here is a type of attack, that how the attack will occur through the internet, which is, you can say, is untrusted network. Now again, one side there is protected private network and other side there is internet, and in the middle there is a firewall. Now from the firewall we have monitor, log and notify. That means monitor, log and notify are what? When any attack occurs, the firewall will monitor and save the IP address of that fake hacker into its log file. अब यहाँ पे log क्या है? log का मतलब है, log में सारे IP एड्रेस हमारे स्टोर होते हैं जब भी कोई अटैकर अटैक करना चाहता है प्रोटेक्टेड प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, फायरवॉल इज़ अ टू वे प्रोसेस। जब हम कोई किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तब हमारा IP एड्रेस फायरवॉल स्कैन करेगा, और जब हम जिस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस वेब सर्वर से कोई सर्विस आएगी उसका IP एड्रेस भी फायरवॉल स्कैन करेगा, और उसका IP एड्रेस जो ऊपर लॉग फाइल दे रखी है अपनी लॉग फाइल में स्टोर करेगा, उसे मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि वेदर दैट IP एड्रेस इज़ फेक और नॉट. Then it notify to the user who is in the private network that this is the fake IP address, and from here only the connection will terminate. Now there are various firewall technologies. First is packet filtering firewall. Now what is packet filtering firewall? As we know that all the messages or all the data which is sent from sender to receiver are in the form of packets. Now what is the role of filtering over here? That firewall filter the packets. It means that firewall filter the data, that whether that data is secure or not. In the syllabus there is only one technology, that is packet filtering firewall. Now here is some protocol stack, internet protocol stack. The use of internet protocol stack is, there are different type of layers. Through this layer the communication between the sender and receiver is done. Now there are, we can see total 5 layer. First is application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. Now first is application layer. Now what is the role of application layer? Application layer, like we can say web browsers. Now here कि web browsers हमारे कौन कौन से होते हैं, like we can say Chrome, Firefox, these are all web browser, or you can say these are the applications through which we will search anything. So the work of application layer is what? The work of web browser means to search anything, or you can say to search or to have any request for any website.
through this application layer, the request through the browser for any website is done. Now next layer is transport layer. Now what is the use of transport layer? As we have discussed that transport means you can say bus, car or truck. These are all transport. The work of these transport is to carry the material in bulk from one source to destination source. So here also transport layer works for end-to-end connection between the sender and the receiver. Now when we from application layer, when the request is made through the web browser, now that request to ensure that whether the connection is made between the web browser and web server or not, that is the responsibility of the transport layer. Transport layer will make end to end connection. और वी कैन से जैसे लाइक हमें कोई पोस्ट करना हो, कुछ भी लेटर, कोई भी लेटर पोस्ट करना हो, तो जब हम लेटर कोई पोस्ट करते हैं तो फर्स्टली हम पोस्ट करने के टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस जाते हैं उस पर पोस्ट करते हैं, तो जो पोस्टमैन होगा वो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारे लेटर्स को कलेक्ट करके किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा. तो ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो उस टाइम पे हमारी ट्रेन होती है कि पोस्टमैन ने क्या करा, सारे पोस्ट ऑफिस में जाके सारे लेटर्स इकट्ठे करे, ट्रेन के थ्रू ही, वो एक ट्रेन ही हमारा मीडियम में ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू मेरे लेटर्स जा रहे हैं, मतलब एक एंड टू एंड कनेक्शन बन रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर का काम क्या है? अगर हमें कुछ भी कोई भी लाइक डिलीवरी, पिज़्ज़ा डिलीवरी करानी हो अपने घर पे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को अपना एड्रेस बताना पड़ेगा. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी सर्विस, सो वी हैव टू गिव द IP एड्रेस फॉर दैट. लाइक हमारी मशीन का भी कोई IP एड्रेस होगा और जिस सर्विस के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो सर्विसेज जब हमें प्रोवाइड होगी, वो वेब सर्वर का भी IP एड्रेस हमारे पास आएगा. तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि IP एड्रेस असाइन करना, मीन्स एड्रेस असाइन करना. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मटेरियल या हमारा मैसेज कौन से एड्रेस पे जा रहा है? सो द रोल ऑफ IP एड्रेस इज टू असाइन एनी एड्रेस टू द मैसेज और टू द डेटा. नाउ नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर? जब हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर मीन्स टू प्रोवाइड एन्क्रिप्शन टू द मैसेज. एन्क्रिप्शन का मतलब, अगर मैं कोई भी लेटर पोस्ट कर रही हूँ तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो लेटर मेरा सिक्योर है कि नहीं? हमें सबसे पहले उस पर क्या करना पड़ेगा, सील लगानी पड़ेगी, या फेविकोल से आप कहते हो कि हम उसे पेस्ट कर देते हैं, उस लेटर को पूरी तरह से मतलब सील लगा देते हैं. दैट मीन्स वी आर एनक्रिप्टिंग दैट लेटर. ऐसे तो मतलब अगर हमने खुला छोड़ दिया तो कोई भी पढ़ लेगा. तो लाइक हियर ऑल्सो द डेटा इज एनक्रिप्टेड इन डेटा लिंक लेयर थ्रू वेरियस एनक्रिप्शन टेक्निक. नाउ लास्ट इज आर फिजिकल लेयर. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल लेयर? Physical layer means the data is converted into 0-1 form. As we know that our computer, our machine understand only the machine language. So here the data is converted into 0-1 form. So in the previous slide we have studied read that packet filtering firewall. Packet filtering firewall में सबसे पहले हमें ये ज़रूरी था कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो कैसा हो रहा है. जब हमें कम्युनिकेशन का पता चलेगा तभी हम फायरवॉल का यूज़ करेंगे बीच में. सो ये 5 लेयर्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन था. फर्स्ट वाज एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है? हम कोई एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स, जिसके थ्रू हमें कोई भी वेब सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिस वेबसाइट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर. नेक्स्ट इज़ आर ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर मीन्स जो हमारा एंड टू एंड कनेक्शन डिसाइड करेगा कि अगर हमें मैसेज एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, क्या वो कनेक्शन मेंटेन है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर. नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द IP एड्रेस टू आवर मैसेज. यहाँ पे सोर्स का भी IP एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का भी IP एड्रेस होगा. Now next is data link layer. Data link layer means to encrypt the message
to provide the security to the message. And next is physical layer. Now what is the role of physical layer? Physical layer means our computer understand 0-1 form, that means machine language, so our data is converted into 0-1 form. नाउ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जैसे अब हमने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन हमारी कैसी हो रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अब हमारा आता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में एक्चुअली होता क्या है. फर्स्टली हमें पता है कि फर्स्ट इज दिस फायरवॉल वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल. जो हमने अभी ऊपर ये पूरा प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ा है, इसे हम OSI मॉडल भी कहते हैं. दैट मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. ये हमारा सारा क्या होता है, OSI मॉडल. तो ये जो मेरा फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, ये मेरा नेटवर्क लेयर पे काम करता है. नेटवर्क लेयर मतलब यहाँ पे इस लेयर पे, कि जहाँ पे हम IP एड्रेस अपना साथ में अटैच करते हैं. क्योंकि मैंने बताया था फायरवॉल का काम क्या होता है कि वो जो फेक IP एड्रेस होते हैं उन फेक IP एड्रेस को रेक्टिफाई करना और उनका कनेक्शन टर्मिनेट करना. एक टाइप से वो फिल्टर करते हैं. अगर मैं फिल्टरिंग की बात करूँ, फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज एक टाइप की स्कैनिंग. अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात ले लेते हैं, कॉलेज में जब बाहर से कोई भी विजिटर आता है तो सबसे पहले बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है. तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, मतलब उसकी एंट्री कराना रजिस्टर पे,